Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 8. The chapter which we are related with is non-trading concerns. So we have very interesting question today. Little bit short but very important for your paper. Just two adjustments are given. Receipt and payment account is present over here. Since we are doing it for this is your 8th question. So I'm very sure that way of solving this question, performer of this question and method is already introduced. So we are now going to solve it directly. पहले step के तौर पे we will be focused upon adjustments. So let's start. On 31st December 22, annual subscription arrears are called outstanding owing, arrears, not received yet, receivable, all names are same, so it's outstanding, but it is related to subscription, and you can see that subscription is written on receipt side, so it's an income. So we will come over here. Since this adjustment is related to subscription, mention it, and now this subscription is arrear and date is closing, so you do know closing outstanding would be added. One thing, amount of outstanding subscription is 1400. So first effect is completed. Outstanding second effect is asset. There are two assets, opening and closing, but since it is closing, we will be going to the balance sheet, asset side, and we will mention outstanding subscription. Amount is, I think 1400 was, yes. Alright, first adjustment and double effects are completed. Rupees 400 is to be written off as depreciation. So depreciation first is your expense and it is required to be calculated, but here look at this, amount is already been calculated, so you will put 400 over here. So depreciation calculate करनी थी, 400 रुपया खुद ही दिया हुआ था. We have directly written. Next step is to go to asset side, and this depreciation was related to furniture. So over here mention and depreciation would be subtracted, and that depreciation was 400. So 400 depreciation, it is calculated over here and written on expense side, and then subtracted from asset side. Calculated means it was already given, so we have directly written on amount side. Capitalized membership fees. As you know, in income and expenditure account you would not write any capital expense or capital item. ये अब खुद कह रहा है कि लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड. सो इनकम साइड पे देखें, ये लाइफ मेंबरशिप फीस है 1000 और इसको कैपिटल बनाने के लिए कहा जा रहा है. सो हम डायरेक्ट कैपिटल साइड पे आएंगे, लाइबिलिटी साइड पे, और लाइफ मेंबरशिप फी को 1000 कैपिटल बना दिया. सो कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप फीस, और यहां से लाइफ मेंबर 1000 उठा के वहां लिखते हैं. So you can see that only two adjustments were present. We have solved it. Now simply pick these amounts and write to the opposite side. First is balance. It is opening balance, capital type of expense, capital type of item, so it would not be written in expense side. Since it is opening balance of cash, तो ये asset है. अब कौन सा asset है? Opening asset or closing? Since it is opening, so we'll go to opening, and here you will write balance. How much balance we do have? 4952. So write down 4952. लें जी, बैलेंस भी हो गया. अब नेक्स्ट चलते हैं. एनुअल सब्सक्रिप्शन 6520, इसकी जगह बचाई हुई है. सो ओवर हियर आई थिंक अमाउंट वाज 4952. एक दफा चेक कर लेते हैं. सब्सक्रिप्शन 6520. हाँ, कोई मिलती जुलती भी रकम नहीं है. 6520 सब्सक्रिप्शन अमाउंट 6520, और अब हम इसको ऐड करके लिख सकते हैं. 6520 was original amount, then outstanding was 1400. We have added.
सो सब्सक्रिप्शन भी कंप्लीट, लाइव मेंबर को कैपिटलाइज बनाने के लिए कहा था, वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट। उसके बाद एंट्रेंस फीस 800 है और एंट्रेंस फीस के बारे में कोई चीज डिस्कशन में नहीं आई, सो विल राइट ओवर हियर एंट्रेंस फी and this is 800. After entrance fees we have miscellaneous receipt, and in income side we will just write down miscellaneous receipts. As you know, there are tiny type of receipts, we do not need to mention the names. 932 is why we are directly writing on the income side. Interest 160, 160 interest. So what you have seen is whatever amount is written over here, without any doubt we have transferred to the income side. अब इंटरेस्ट लेते भी हैं और पे भी करते हैं, इंटरेस्ट फीस ले भी सकते हैं, पे भी कर सकते हैं, बट सिंस दे वर रिटर्न ऑन रिसीट साइड तो हमने इनको पकड़ा और डायरेक्ट इनकम साइड के ऊपर पोस्ट कर दिया। जैसे कि फीस पे भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव भी कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। सो when they were written on receipt side हमने इन सारी अमाउंट्स को पकड़ के इधर लिख दिया। ले जी, receipt side is completed, now we are focusing upon other side, that is payment side। expense में ट्रांसफर करेंगे इन सबको उठा के। जनरल एक्सपेंसेस पहली आइटम है, so just write down and amount of general expenses 2168। after that we have salaries, salaries is also expense 2200 लिख दें यहाँ पर। देन वी हैव फर्नीचर इज योर एसेट, तो यहाँ जगह वैसे ही छोड़ी हुई है हमने फर्नीचर की, और दैट इज 2200। फर्नीचर नहीं, 3200 इज अमाउंट ऑफ फर्नीचर, सो ओवर हियर 3200। ओके, आफ्टर फर्नीचर वी हैव रेंट। चलो जी, रेंट आपका एक्सपेंस है, वो आपको क्लियर है, बैलेंस शीट आइटम नहीं होती रेंट। अमाउंट ऑफ रेंट इज 2240। आफ्टर रेंट वी हैव प्रिंटिंग, सो प्रिंटिंग लिख देते हैं which is 500, put amount over here। then we have repair 600, repair is also your expense 600। ये इसकी अलाइनमेंट खराब हुई है, इसको एक तो अलाइन कर लेते हैं, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, सो इरिटेशन होती है फिर इस तरह से जब वो बैलेंस्ड ना हो। सो प्रिंटिंग और रिपेयर भी हमने लिख ली। लास्ट इज योर बैलेंस 3456, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है। वी विल गो टू क्लोजिंग साइड and here you will mention balance of cash amount 3456, और ये कैलकुलेशन भी साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं। 32 was furniture less depreciation of 400। so guys, you have completed all payments, all expenses and adjustment as well। so it's time to calculate और फाइनल बैलेंस। जरा चेक कर लें कि हमने ये अमाउंट सेटल कर ली नहीं है सारी। चलें, अब आपके पास बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए तय करना है कि किधर कैलकुलेट करें। सो टोटल ऑफ इनकम साइड इज 9000, एक्सपेंस 8000, इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, सो इट वुड बी कंसिडर्ड एज योर सरप्लस, बट एक्चुअली यू विल बी कैलकुलेटिंग बैलेंस। कैसे? larger amount you will pick and smaller amount 8108 would be calculated। so balance surplus, और ये आंसर चेक करें, surplus is 1704। अच्छा जी, next step is to calculate our opening statement। अब यहाँ देखें, opening statement में सिर्फ एक ही रकम लिखी हुई है 4952,
तो जो बैलेंस आता है ओपनिंग स्टेटमेंट का, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ओपनिंग कैपिटल इज योर आंसर। और वो कैसे निकालेंगे, देखिए जी, लार्जर अमाउंट दिस एंड स्मॉलर अमाउंट इज 0, वो पुट कर दें, यही आपका कैपिटल है। इस कैपिटल को आपने यहाँ फिट करना है और बेशक इनर कॉलम में लिख दें 4952 और आपको ऐड करना है सरप्लस भी। आपको याद होगा कि हमने नेट प्रॉफिट को ऐड करना होता है और यहाँ चेक करते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सरप्लस वी हैव कैलकुलेटेड, 1704। सो ओवर हेयर 1704 वुड बी एडेड। फाइनल अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 4952 was amount of capital और 1704 was surplus। So ये चेक करें जरा, asset side is 7656 and liability side is also 7656। ये तो मैच हो गया, बैलेंस शीट का आंसर मैच करते हैं। So look at there, 7656 is your balance sheet answer। इस तरह से ओपनिंग भी बनी, बैलेंस शीट भी बनी और साथ में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बन गया। एंड यू कैन सी इन 11 मिनट्स वी हैव सॉल्व्ड इट। तो आपको तो और कम टाइम लगना चाहिए क्योंकि यहाँ तो मैं समझा भी रहा हूँ आपको साथ साथ। क्वेश्चन इज completed। आई एम श्योर यू पीपल अंडरस्टूड एवरीथिंग, बट स्टिल इफ यू आर फीलिंग एनीथिंग डिफिकल्ट यू आर वेरी ओपन टू शेयर योर प्रॉब्लम through messages, text, or you can directly contact to share your problem. I will humbly be trying my best to answer your questions. So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.